Mrs. Kundra for IELTS Without Effort and ex-IELTS examiner. So, this video is very special because I am going to reveal you the secret of predicting part 1 speaking module questions. Yes, you heard it right. You can predict part 1 questions, provided of course you know the topics. So, I will give you a standard questions and we can fit in those the topics. और मैं ये हिंदी में भी करती हूँ, you know that because I have started to do it in हिंदी also. तो आज आप पार्ट 1 क्वेश्चंस खुद कैसे बना सकते हो, राइट? अगर आप खुद बनाओगे, ओके, इफ यू मेक देम योरसेल्फ, ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंटली. एंड एज आई ऑलवेज डू, मेरा स्पेशल चीज़ क्या होती है मेरे उसमें वीडियोस में, चाहे क्यू कार्ड्स की है, चाहे रियल एग्ज़ाम की है, what is the specialty of my videos? I explain you properly the vocab and everything. So this is about prediction of part 1 questions and the vocab you can use so that जो part 1 है आप you sail through, okay, and this builds up your impression for the examiner. So लास्ट तक रहना बेटा, मैं एक्सप्लेन करूंगी, प्रिडिक्ट करूंगी कि कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं. जैसे क्वेश्चंस होंगे आप आंसर्स आराम से कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स माय नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू अबाउट हाउ टू गेट और हाउ टू डील विद पार्ट 1 क्वेश्चंस. दैट मीन्स उसके डूज और उसके डोंट्स क्या हैं वो मैं ज़रूर बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में. नहीं तो फिर बड़ी हो जाती है ना, फिर आप लोग कहते हो मैम ये तो बहुत बड़ी वीडियो हो गई. बड़ी वीडियो होगी तो ही समझ आएगा बेटा. सो बी थ्रू द लास्ट. ओके, थैंक यू. एंड लेट्स नाउ गो टू द पार्ट 1 ऑफ हेयर स्टाइल. वो बेटा टॉपिक कोई भी हो सकता है ना, हम उसको चेंज करेंगे कि इसको कैसे कैसे हो सकता है. लाइक, डू यू हैव अ फेवरेट लाइफ हेयर स्टाइल? ओके, लाइफ स्टाइल भी हो सकता है. फेवरेट, यहाँ पे कीवर्ड है फेवरेट. वो आपको फेवरेट हेयर स्टाइल के बारे में बात कर सकते हैं या फेवरेट स्पॉट. ओके, डू यू हैव अ फेवरेट हेयर स्टाइल? डू यू हैव अ फेवरेट स्नैक? ओके, ओके, स्नैक भी हो सकता है. एनीथिंग दैट इज योर फेवरेट. तो वो टॉपिक में लगा लो आप, कोई भी टॉपिक आप करना चाह रहे हो. देन व्हाट काइंड ऑफ हेयर स्टाइल डिड यू हैव एज अ चाइल्ड? अब इसको आपने पास्ट में आंसर करना है. यू हैव टू आंसर इट इन द पास्ट टेंस एंड दिस इज योर प्रेजेंट इंडेफिनिट. जो चीज़ आप शुरू से पास्ट में शुरू हुई और अभी तक हो रही है. ओके, सो दैट इज दिस टेंस. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट पार्ट 1 में वो आपके टेंसेस चेक करते हैं बेटे. ओके, सो वॉट एवर टेंस इट इज इन यू हैव टू रिप्लाई. ये देखो, अब यहाँ पे कीवर्ड क्या है? काइंड ऑफ एंड एज अ चाइल्ड. सो इसको हम रिप्लेस क्या कर सकते हैं किस टॉपिक में? सपोज इट इज अबाउट गेम्स. सो व्हाट काइंड ऑफ गेम्स डिड यू प्ले नेचुरली एज अ चाइल्ड? व्हाट काइंड ऑफ टी शर्ट्स डिड यू वेयर एज अ चाइल्ड? ये टी शर्ट वाला तो करंट टॉपिक है, आपको मालूम है. आई विल बी डूइंग दैट पार्ट 1 ऑल्सो क्वेश्चंस. सो व्हाट काइंड ऑफ टी शर्ट्स यू वोर एज अ चाइल्ड? अब इसी से मैंने चेंज किया है, ऐसे प्रोडिक्ट करने आपने क्वेश्चंस. देन ये देखो, इज देयर अ पर्टिकुलर हेयर स्टाइल दैट यू रिमेंबर? कोई ऐसा हेयर स्टाइल जो अभी तक याद है आपको? यू नो, अ पर्टिकुलर गेम, suppose you are saying a particular sport, sorry for the slip, and then ये भी हो सकता है there is a particular chocolate that you
like, उसमें आपको ये बोलना है that what is the kind of chocolate, like it could have, you know, full of fruits and nuts, or it's a dark chocolate because it has medicine properties, whatever. अब ज्वेलरी का भी एक आइटम, यू नो, इट इज़ न्यू, रिसेंट है, तो इज़ देयर अ पर्टिकुलर ornament or a jewelry item that you remember or you like, you know, remember. Okay, I remember that I had purchased you know, a necklace or a pendant, like that. So when did you last have your hair cut? Okay, अब इसको हम कैसे, last मेरा कीवर्ड है यहाँ पे, इसी के ऊपर क्वेश्चन बनाना है. Okay, when did you last purchase your jewelry? What did you do in your last you know, weekend? Okay, you know, like what was the last time when you stayed you know, awake? ये भी नया वाला है, तो last के ऊपर, right, ये नोट कर लो. Okay, when did you last play your favorite game? Okay, last. Okay, इसके ऊपर ये कीवर्ड है. Do you think it is important to have a fashionable hairstyle? बेटा थोड़ा सा ये गड़बड़ हुआ है. I mean, I have written lot of things because I was teaching in my class. So is it important to have? ये आपका important keyword है. अब इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन बना लो किसी भी टॉपिक पे. Like, do you think it is important to wear fashionable jewelry? Or you can say to study about the outer space. आउटर स्पेस वाला टॉपिक मैंने किया हुआ है, पार्ट 1 का, ज्वेलरी का भी किया है. देन डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव स्नैक्स बिटवीन मील्स? डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्लान योर वीकेंड? ये कीवर्ड्स दे रही हूँ मैं आपको, उसके ऊपर आपने क्वेश्चन डेवलप करना है ना. डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ रूटीन? ये सारे क्या है, क्वेश्चंस हैं जो रीसेंट टॉपिक्स में हैं. अब ज़रूरी नहीं है आप मक्कड़ जाओ या कहीं और कोई. आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट एनी बुक प्लीज, बट आई एम नॉट सेइंग दैट यू, इफ़ यू ट्राई टू मेक इट योर सेल्फ द क्वेश्चंस, यू सर्टनली विल बी मोर कॉन्फिडेंट. ये प्रोडिक्शन कर रहे हैं हम. टॉपिक्स तो कोई भी हो सकता है ना, कोई भी कॉमन टॉपिक हो सकता है. अब चॉकलेट्स का है ना, यू नो, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू हैड अ चॉकलेट? ओके ओके, क्वेश्चन बन गया. ऐसे ही बनाते हैं वो लोग. देन व्हाट काइंड ऑफ हेयर कट्स आर पॉपुलर फॉर वुमेन और मेन इन योर कंट्री? ये वाला क्वेश्चन देखो. सो व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज or what kind of sports are popular for men and women in your country, or for the women in your country, or what kind of clothes are popular for men in your country or women in your country? ये change, kind of popular, ये keyword है. Okay, then what kind of holiday destinations are popular in your country? ऐसे तो you can make any number of questions for part 1 on any topic. Do you plan to change your hairstyle? Do you plan to change your hobby? Plan to change, ये question है. ठीक है बच्चा. So do you plan to change your hobby in near future? अब यहाँ पे क्या है, future, future tense में आंसर करना है. Okay, or you plan to change your place of work, or you plan to change your hometown. It could be anything. So if you want your desired band scores, please don't hesitate in contacting me for personal or group coaching. Group coaching I will be starting in February 15th, and my online classes personal are still available. And of course the evaluation services are there for speaking and the writing modules. देखो भाई, मेरा बिल्कुल भी एडिट नहीं होता है. जैसे मैं एक्सटेम्पो बोलती हूँ, मैं कोई स्क्रिप्ट लेकर नहीं बोलती हूँ. आई डू नॉट टेक एनी स्क्रिप्ट. You know, all the YouTube channels, you will see them, they edit it so many times, they have the script before their eyes and then they speak. अगर आप यहाँ पे देखोगे, आप देखोगे मेरे सिर्फ पॉइंटर्स हैं और मैं अपने आप बोल रही हूँ एक्सटेम्पो. So that shows the expertise of the
कोच, यस, देख के तो कोई भी बोल लेगा ना बेटा. ओके, एनीवे, हाउ ऑफ्टन डू यू गेट योर हेयर कट, है ना, ऑफ्टन. अब इसको ऑफन भी बोल सकते हैं, ऑफ्टन भी बोल सकते हैं. देखो मेरे वीडियोस में आपको प्रोनाउंसिएशन भी मिलेगा, वोकैब भी मिलेगा, आइडियाज भी मिलेंगे, एवरीथिंग. नोबडी इज डूइंग लाइक दिस. ओके, एनीवे, हाउ ऑफन डू यू वेयर टी शर्ट्स, राइट. टी शर्ट्स का नया टॉपिक है. हाउ ऑफन डू यू हैव स्नैक्स. ओके, हाउ ऑफन डू यू गो आउट ऑन वीकेंड्स. अभी बना लिया मैंने बैठे बैठे. देन how often do you listen to the music, how often do you play football or whatever, often. अब इसका आपके पास vocab होना चाहिए जब often उन्होंने पूछा. ओके, वो मैं बाद में भी बताऊंगी कैसे करना है. how long have you had your current hair cut, so how long you have had, so this is what, present perfect. ओके, तो आपको बताना है ड्यूरेशन, हाउ लॉन्ग यू हैव हैड. ओके, सो हाउ लॉन्ग यू हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टेइंग इन योर होम टाउन, डू यू प्लान टू चेंज योर होम टाउन. ओके, हाउ लॉन्ग यू हैव बीन स्टेइंग इन दिस होम टाउन, राइट. हाउ लॉन्ग यू नो हैव यू बीन यू नो सिंगिंग, ये भी हो सकता है. कुछ भी जो आप you have been doing, right. Can you cut your hair yourself, यहाँ पे ये कीवर्ड है. अब can you play an instrument yourself, you can say no, I would rather hire a coach, I can't do it myself, or I'm very you know adept, or I'm very conversant. Yeah, conversant मीन्स मेरे को अच्छी से मालूम है. सो दिस इज ऑल एक्सटेम्पो कमिंग. मैं कोई एडिटिंग नहीं करती. वॉट एवर आई यू नो गिविंग इज ऑल एक्सटेम्पो. सो आई एम वेरी एक्सपर्ट एट दिस यू नो इंस्ट्रूमेंट. ओके, यू कैन से, और आई यू नो आई डू नॉट प्ले बट आई टेक द हेल्प ऑफ अ कोच. टेक द हेल्प इज ऑल्सो कॉलोकेशन. एनीवे, फिर तो बहुत बड़ी हो जाती है ना वीडियो, आप लोग लाइक नहीं करते हैं. ओके, if you could change anything about your appearance, what it would be? Change anything about da da da. Question ये है. अब क्वेश्चन कोई भी बना लो. ओके, रूटीन के बारे में बना लो. इफ यू कुड चेंज एनीथिंग अबाउट योर रूटीन, व्हाट वुड इट बी. अगेन वो आपका फ्यूचर टेंस चेक कर रहे हैं, है ना. इफ यू नो एनीथिंग दैट यू कैन चेंज अबाउट योर जॉब. ओके, देन the last one is like, what do you dislike about t-shirts. okay, abhi t-shirts wala naya topic tha. What do you dislike about purchasing from small businesses, ye bhi ek naya topic hai. what do you like about or dislike about keeping lot of keys, ye bhi keys wala bhi you know this thing. और ये आपको किसी you know you will not get it in any book. I have just made them extempo. ओके, तो यहाँ पे डिसलाइक था और लाइक था अपना कीवर्ड. तो इस तरह से यू इन दिस मैनर यू कैन रियली you know make lot of questions according to the topics which are recent. You don't have to you know. अच्छा, एक तो ये myth है. It's a myth. What? So I have to do in Hindi and English both, no? So it is a myth. What is it a myth? That the questions that are given in some Dada book, only those will be asked from part 1. No, it is not like that. They just give you a hint that these are the type of questions on these type of topics. समझे बेटा? तो कोई ज़रूरी नहीं होता वो जो आपने किसी किताब से पढ़ा है वही पार्ट 1 के क्वेश्चंस होंगे. देयर कुड बी डिफरेंट एंड समटाइम्स आई मेक देम माई सेल्फ ओनली, यू नो, 3 or 4 ऑफ देम, बिकॉज आई नो दिस इज द पैटर्न. और आज मैंने आपको पैटर्न बता दिया. एंड फॉर सो मेनी ईयर्स आई हैव बीन डूइंग दिस टीचिंग ऑफ इंग्लिश फॉर 36 ईयर्स. और मैं एक्साइल्स एग्जामिनर रही हूँ, तो मेरे को मालूम है कि ये पैटर्न होता है. और ऐसी कोई बात नहीं है कि आप यू कैन नॉट डिपिक्ट और यू कैन प्रिडिक्ट व्हाट इज द यू नो क्वेश्चंस. आप आराम से कर सकते हो. सो
these are the predictions and I am not going for that. अरे prediction हो गई, ये हो गया, वो हो गया, prediction आपका hit हो गया. अब इसमें तो कोई भी questions आएंगे, आप कहीं पे भी बना लो अपने आप. आपको easily part 1 के she won't ask you something different, the examiner. She is just going to ask you these questions which I have made and इसी के around वो लोग revolve करते हैं. इवन क्यू कार्ड्स भी वो बहुत कम चेंज करते हैं. दे जस्ट चेंज अ बिट हियर एंड देयर. जैसे अ गिफ्ट यू गॉट एज अ सरप्राइज, अ गिफ्ट दैट यू वाज वेरी यूजफुल टू यू, है ना, अ गिफ्ट दैट इज वाज नॉट यूजफुल टू यू. ऐसे कुछ बना देंगे क्यू कार्ड, चेंज कर देंगे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे. अ प्लेस दैट यू विजिटेड और वुड लाइक टू विजिट और विच यू कुड रिकमेंड टू योर टूरिस्ट. लो भाई क्यू कार्ड ऐसे कितने भी बना लो. अब ये तो क्लास बहुत बड़ी चली जाएगी. थैंक यू एवरीवन बिकॉज दिस इज एक्सटेम्पो और नो एडिट्स, सो डोंट माइंड द स्लिप्स. बिल्कुल एक्सटेम्पो क्लास होती है जैसे मैं पढ़ाती हूँ. ओके, एंड इफ यू वांट योर डिजायर्ड बैंड स्कोर, ऑफ कोर्स आई एम देयर टू हेल्प यू एंड दिस इज माय phone number. You can WhatsApp me or even you can call me. There is no problem. Thank you and please hit the bell icon beta ji so that you get notifications. And आपको वीडियो अच्छी लगी, बुरी लगी, आप ज़रूर कमेंट करें. प्लीज़ कमेंट about the video or anything else you want me to do about. Thank you. See you again in the other video. It is coming for the real exam and also for some tips for the part 1. And this is a shout out to Gurjeet Kaur. I remember her. They've been commenting. A shout out to Sohan Singh, to Gagandeep. Of course, I shouted out on the last video also. Niharika, of course, you are always there. And Navdeep was also there for that shout out and he gave me comments. Hardeep also. Thank you all of you who have been commenting, and please, this is a shout out to all of you to comment. Let's see who comments the best and the worst. Of course, worst means even if you did not like it, you should tell me, oh ma'am, this is not clear or this is like that. And of course, ideas wali bhi banaungi beta. I know आपको ideas में problem आ रहा है. And the prediction is, I think that the 4th and the 11th February exam could be, I mean, it's a 50-50 kind of thing, which I feel could be not easy, but it would be better if you fill in these dates. Okay, thank you, all the best.